जयराम। श्रीनगर में समाप्त हुई। चलना खत्म हुआ। कल मेन फंक्शन है हमारा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। लाखों लोगों से मिला, बातचीत की। शब्द नहीं है मेरे पास आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिले। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए। और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हों, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी यात्रा, हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं। इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है। तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। हम इसमें जरूर शामिल हुए। इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी, आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जो जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे। आई मेट पीपल व्हेन आई एंटर्ड जम्मू। आई मेट पीपल फ्रॉम Jammu, Ladakh and Kashmir, all three parts of this region. Was happy. Issues that are being raised here, a lot of them are very similar to issues in the rest of the country.
unemployment, lack of opportunity, corruption, these issues. And then there is another set of issues which are with regards to statehood, representation, voice, which are also being raised here. But that is the width of issues that are being raised. सवाल जम्मू में आया था, 2-3 बार आया, इसको मैंने 3 बार इसका जवाब दिया है. हमारी वर्किंग कमेटी में क्लियरली हमारी पोजीशन दी हुई है. अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल्ड कागज आपको दिखा दूंगा, दिलवा दूंगा मीटिंग के बाद. उसमें बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस पार्टी की व्यू 370 पे है. आपका सेकंड पार्ट क्या था? अभी तो मतलब अभी खत्म हुआ है. ये क्वेश्चन प्रीमैच्योर है. अभी यात्रियों ने मतलब हजारों किलोमीटर चले हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए. अब देखते हैं क्या होता है. मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई, मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है. क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है. देश के लिए एक जीने का तरीका है, और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है. कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है. बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास. थोड़ा और बता देता हूं. मेरे मुताबिक देश की पॉलिटिकल क्लास है, और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं. उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां उसमें, और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई. पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है. मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए. ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है. तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है. दूसरी दूरियां भी हैं. एक और बात आ गई है. जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है. जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है. तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है. तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है. और मेरे माइंड में ये पहला कदम है, और फ्रैंकली मैं बताऊं तो ये छोटा कदम है. मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं. ईस्ट वेस्ट के बारे में देखते हैं. मगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें चलना है. तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है, मतलब यात्रियों में. बट देखते हैं. आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई सी इन जम्मू एंड कश्मीर. आई हैव sadness when I walk through Jammu and Kashmir. I have come here. When I was walking, when I first entered Jammu, a strange idea came into my mind, which was that in some ways my family descended from Jammu and Kashmir and went to Allahabad. And in some strange way, I was making the reverse journey that my ancestors made. So I felt
in a way that I was going home, you know, and that was a very powerful feeling I had. I think I have affection towards the people of Jammu and Kashmir, and I come here with open heart, and I come here with open arms to help in whatever way I can. And I was humbled by the reception that we got in Jammu, in Kashmir. Affection. I think, and this I've realized in my life, that love and affection and listening is a very, very powerful force. And I intend to do as much of that as I possibly can. I don't want to go into sort of commenting on the historical aspect of it. You know, I want to look forward, and I come here with an open mind, and I come here with affection. Targeted killings हो रही हैं, bomb blasts हो रहे हैं. अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं. एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? if situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. नहीं, ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन बिखर चुकी है? ऑपोजिशन यूनिटी आती है वो बातचीत के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक विजन के बाद आती है. और ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ये सही नहीं है. जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी, और विचारधारा की लड़ाई है जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं. भैया थोड़ा तो मतलब अभी 4000 किलोमीटर चले, थोड़ा तो गैप दे दीजिए, थोड़ी तो रेस्ट करने दीजिए. अब देखते हैं. हमारा लक्ष्य था कि यात्रा खत्म होने तक यात्रा पे फोकस करेंगे. और जैसे मैंने कहा, यात्रा से हम बहुत सीखे हैं और यात्रा में से भी काफी आइडियाज इमर्ज होंगे, मगर अभी प्रीमेच्योर होगा कहना कि हम लोग क्या करेंगे. I think statehood and restoration of the democratic process in Jammu Kashmir is fundamental and very important. And I think that would be a first step. The steps that come after that, I don't want to necessarily comment on here, but I think all other states in India have an assembly, have a functioning democratic process, and I think it should be restored in Jammu and Kashmir as well, and also an appropriate solution should be found in Ladakh, because even the Ladakhi people are not happy with what has happened. You didn't answer. No, please. I did answer. Jodo is a vision, it's an idea of how India should move forward. Okay, it's not just a walk. The walk is an expression of a sentiment. The sentiment is listen to people, embrace people, be affectionate to people, and there are other possibilities to deepen this idea, which we will take. I think it is what the RSS and BJP are doing across the country is attacking the institutional framework of this country. Whether it is parliament, whether it is assemblies, whether it is the judiciary, whether it is the media, all institutions are being attacked and captured by the BJP. What you are seeing in different parts of the country and in Jammu and Kashmir are a result of that assault on the institutional framework. Okay? The reason, one of the main reasons we have taken the Bharat Jodo Yatra is because when we talk in parliament,
our mic is shut off. So frankly, being a member of Lok Sabha means nothing. I can sit there, I can raise my hand and say, I want to talk about Notbandi. You can't. I want to talk about GST. You can't. I want to talk about China. You can't. I want to talk about democracy in India. You can't. So this is not only going on in Jammu and Kashmir. It is happening in Jammu and Kashmir, but it's happening all across the country. And it's happening in different ways in different parts of the country. We've lost government after government after government after winning election. We won the election in Madhya Pradesh and our government disappeared. Right? So this is a way of operating that they have. As far as I'm concerned, I'm very clear that the first step in moving forward here is restoration of statehood and restoration of the democratic rights of the people in Jammu and Kashmir. And that to me is step number one. After that, what steps are taken? I was very clear when we were doing the Bharat Jodo Yatra. What are we trying to achieve? We are going from place A to place B. We want to do the Bharat Jodo Yatra and we want to be clear what we are trying to do. I think the next step here is restoration of statehood. And also, again I repeat, a solution for the people of Ladakh. 370, and that's the position on the that the working committee has taken. It's very clear. We will hand you the document. You can read it. That's what our position is. The response that the Yatra got in Jammu and Kashmir was overwhelming. And I think a lot of people told us that they felt that the Yatra reached out to them. And the Yatra showed them that a politics of affection, respect is possible. So the Yatra has already had, in my view, quite a positive effect. Many people who walked with us and who came from the crowd and walked with us said this to us, that look, we have come out and we are so happy that you are talking about love and affection, brotherhood in the country. It's not just a yatra to bring religions together, it's a yatra to bring everybody together. It's a yatra that is aimed at expressing to people that we are all one, we should respect each other, all communities, all languages, all religions, all castes. We will only move forward effectively if we embrace each other, talk to each other, iron out our differences and move forward together. And that message is gone as far as the Yatra. The concrete position of the Congress party with regards to Jammu and Kashmir politics, that you will have to discuss with our PCC president and our local unit here as to what they will be doing. So one of the main issues that has been coming up here is the fact that people's land is being taken away from them. We've been very clear on that issue. As far as restoration of the democratic structure here, we are very clear. And once the assembly is in place, the assembly will take those decisions. I didn't meet, I walked through Jammu all the way here. I met the people of Jammu, I met the people of Ladakh, I met farmers, small business people, youngsters, everybody. I didn't meet pretty much anybody who was happy. You know, I felt that almost nobody was excited about what was going on in Jammu and Kashmir. So, I mean, it was my experience that I didn't meet anybody who was excited or happy about what is going on. So, I'm answering your question. I mean, that might be an idea that the BJP has, but I didn't see, I didn't see happiness on the ground. No, see, the Prime Minister of India feels, the Prime Minister of India is almost, frankly, the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the
the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is a extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate. I want to talk today to my friends in the media. Look, I always I appreciate the work that you are doing in the media. I watched you sit in front there in the media van in the heat, you know, all the way from in the cold, in the heat, all the way from Tamil Nadu to Kashmir. And I'd like to thank all of you. You have played a very important part. Of course, we do complain that your networks aren't responsive to the opposition and they don't raise the issues of the opposition, but we do appreciate what you're doing. And so I'd like to thank all of you. It's been a very pleasurable experience for me. The whole yatra, also my conversations with you, the press conferences I have with you, they're always fun.